Let's start. What are we going to do here? ये project किसके बारे में? The project is about customer segmentation. All right. So I gave you a reading to do. Uh, in fact, it was expected कि जो लोग नहीं है इस group में, they should also be reading some of this, and it's a good refresher. It's a good article about how different types of customer segmentation can be done in different use case. All right. So let's go through this article once. I'll just skim through it. If you have any questions, let me know, or else we'll just skim through this article. All right. So there are mainly few different types of customer segmentations. They call it demographic, geographic, psychographic, behavioral, value based. This is important. Product based is important, and this is machine learning based is nothing but all of these are actually machine learning based only. So we'll see what that is. Just admit someone here. All right. So demographic का मतलब है based on the demography of the person. जैसे कि एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये सब डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोग उनका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, ये सारी डेमोग्राफिक उनके कस्टमर के डेमोग्राफिक के बारे में की इंफॉर्मेशन हम लोग लेके एक सिंपल ग्रुपिंग करेंगे, या तो के मींस यूज करेंगे या फिर some business rules will do which will tell us that okay, for this particular group of for this particular group of customers, I'm going to be marketing differently. All right. So for this particular group of customers, you will be I'll be marketing differently for that particular differently and so on. ठीक है, demographic information use करके. Second is या जैसे एग्जांपल डेमोग्राफी के बारे में कौन से एग्जांपल, एज होता है, जेंडर होता है, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, एजुकेशन, रिलीजन, एथनिसिटी. यूजुअली आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उतनी इन्फॉर्मेशन पे आप कस्टमर सेगमेंटेशन करोगे. सेकंड इज द फर्मोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेगमेंटेशन. दिस इज आई थिंक मेनली यूज्ड फॉर बिजनेसेस. एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई टीम है, सेल्स और मार्केटिंग की टीम है, उनको अपना कुछ प्रोडक्ट बेचना है, और वो प्रोडक्ट उनका ऐसा है कि जो सिर्फ बिजनेसेस को काम में आने वाला है. एंड इफ दे वांट टू डू दैट, दे विल बेसिकली डिवाइड देयर कस्टमर्स which are basically other businesses into smaller groups or different segmentations, and उसके based on that they'll do the marketing on that. तो यहाँ पर कंपनी का साइज, सेक्टर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल. दिस इज यूज बेसिकली फॉर फर्म्स, जो कंपनीज होते हैं उनके सेगमेंटेशन के लिए. ऑलराइट. थर्ड इज जियोग्राफिकल. अगेन, एज द नेम सजेस्ट, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ले लो और उसके बेस पे सेगमेंटेशन करो. जैसे कि आप बोल सकते हो कि you'll have south region, then you'll have a middle east, sorry, you'll have a south region, then you'll have central region, then you'll have eastern region, western region, northern region, and based on that you'll do a different kind of marketing strategy. ठीक है. So straightforward psychological psychographic segmentation में let me just check this one. ओके. तो इसमें क्या होता है, कस्टमर्स के ओपिनियन या फिर पर्सनैलिटी के ऊपर से आप उनको कौन सा प्रोडक्ट पुश करना चाहते हो, या फिर उनको कौन से ग्रुप में डालना चाहते हो, उसके लिए हम लोग साइकोमेट्रिक या फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं. साइकोग्राफिक इंफॉर्मेशन को डिकोड करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि ओपिनियन जब लेते हैं हम किसी का, दैट ओपिनियन कैन बी, so everyone is going to tell their opinion in a different manner. Someone will be very blunt, someone will be sugarcoating it, someone would be maybe hiding some information behind their opinion. So ये सारी इंफॉर्मेशन को कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. तो इट्स नॉट टू इजी, बट पीपल स्टिल डू इट, दे ट्राई टू डू इट. ठीक है. बिहेवियर. बिहेवियर मतलब आप क्या behavior दे रहे हो. For example, if you're visiting a website, how many times are you seeing a product? How much time are you spending on reading the description? How much time are you spending on reading the comments? How was your behavior basically on for the shopping website? तो ये सारे behavior देख के
वो कुछ इंटेंट मॉडल्स होते हैं जिसके ऊपर से ये पता चलता है कि कस्टमर का इंटेंट क्या है. इज ही इंटेंटिंग टू बाय समथिंग, इज ही इंटेंटिंग टू जस्ट वॉच ऑन योर वेबसाइट, और व्हाट इज दिस बेसिकली इंटेंट. तो उसके लिए बिहेवियर स्टडीज होती है, उसके ऊपर से सेगमेंटेशन की जाती है. सो देयर विल बी सम कस्टमर्स हु आर intended to buy something, there's some customers who are intended to not buy something. उसके बाद में when was the last time you purchased something from this website, and so on. ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके वो लोग सेगमेंटेशन करते हैं. दिस इज वैल्यू बेस्ड. दिस वन ऑल्सो इज प्रेटी कॉमन. आप को suddenly if you add more money in your banks, you'll start getting calls for the credit cards or fixed deposits and all this different kind of products from the banks, right? So basically they now have segmented you into a high value customer. When you didn't have any balance, they were not interested because you were not a high value customer to them, right? So things like that. So based on the value, the marketing will change. What value that the customer bring to the business. If a customer is really valuable, तो there'll be more than one person or एक dedicated person रहेगा जो आपको हमेशा कॉल करेगा. He'll be a banker and so on. So again, that is based on the value of the customer. Value कैसे पता चलती है? How much time he's spending on the website, how much money he's spending on our product. All of that will basically tell us what is the value of a customer. This is product based segmentation. Again, products के ऊपर से segmentation. Uh, you have seen this in many places. Again, I think this one's price position with the category good, better, best, GPM model. Okay, I think this is basically अगर एक आपका प्रोडक्ट है, लेट्स से योर प्रोडक्ट इज अ केचप, ठीक है, और केचप के तीन चार ब्रांड है, ठीक है, एंड लेट्स से there's a Maggie and there's maybe Nestle and there's one more brand, ठीक है, जो केचप बनाते हैं, alright, and when the customers buy these products, do the repurchase, okay. तो ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है. हाउ मच इज द रीपर्चेस हैपनिंग. एक बार उनका प्रोडक्ट जब खत्म हो जाता है, जब कोई बॉटल लेके जाता है सॉस की या फिर केचप की, मे बी आफ्टर 10 days, आफ्टर 20 days, आफ्टर 1 month, दे विल कम बैक एंड बाय द सेम प्रोडक्ट. सो दैट इज द रीपर्चेस हैपनिंग, ओके. तो बाय लुकिंग एट द प्रोडक्ट, व्हाट विल ट्राई टू फाइंड इज ये प्रोडक्ट पे रीपर्चेस हो रहा है कि नहीं. अगर रीपर्चेस ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ गुड प्रोडक्ट, पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल उसको बार बार खरीद रहे हैं, एंड इट्स अ हाई रीपर्चेस, so it's a good product. So that's this GBB model: good, better, best. So good is basically meaning कि this product is good, better is this product has some repurchase, best means this product basically has very high repurchase. यहाँ पे ग्राफ पे दिखा रहा है, ठीक है. So you'll be seeing some of the repurchase which are outliers here, like 2000 times repurchase, 1000 times repurchase, but on an average this product or any product who is having high repurchase will be a better product than the other ones which are not having high repurchase, ठीक है. वो यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट परचेज कैटेगरी ब्रांड, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ वंस. तो हमें कौन सा करना है यहाँ पर, दैट इज द टास्क, ठीक है. तो लेट्स लुक एट द डेटा एंड since we are going to do the customers segmentation, customers के पास क्या है, the data that we have, what do the customers have there, what do the customers own, डेटा किसके बारे में. Yes, let me go to my mail account here. Customers किसके बारे में. Sorry, what is the data about. ग्रुप ए का भी वही डेटा है. Anyone can answer. If other people have seen the data, you all can answer too. What is the data about? Come on, guys, be prompt.
डेटा किसके बारे में है ये आपका? बैंक प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो यू हैव डेटा वेयर आप यू हैव कस्टमर्स, और वो कस्टमर्स के पास कुछ बैंक के प्रोडक्ट्स हैं, करेक्ट। तो हमें कस्टमर का सेगमेंटेशन करना है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स। एंड इफ यू लुक एट दिस, what kind of what kind of segmentation would it be? Would it be product consumption? Would it be ये किया नहीं हमने recency frequency monitoring, but what kind of segmentation are we going to do here? This one's product purchased, product है हमारे पास जो customers ने खरीदे हैं, and we want to segment them based on the products that they are buying, okay, or products that they have. All right, let's get started. All right, let's copy this one. GitHub desktop, add a clone here because I want application. All right, there you go. Let's go here. Customer segmentation. यहाँ पे नया project बनाता हूँ मैं. File, new project. Open the project from here. PyCharm projects. Customer segmentation. Okay. Virtual environment. Yes. Everything create. Okay. ठीक है. तो let's open our notepad here. क्या करना है हमें? लिख के रखते हैं यहाँ पे. This is not required for me. So the project is customer segmentation. Okay. Now the things that I want to do is I'm getting an echo. Okay. तो हमें सबसे पहले डेटा लोडिंग करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है. पहले बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करना है सबसे पहले. तो यहाँ पे बट विल इग्नोर दैट. डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा लोडिंग, उसके बाद में डेटा क्लीनिंग करना है थोड़ा सा. उसके बाद में हमें डेटा को और क्या करना होता है, करना है अपने वैल्यू. ठीक है. तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में हमें पता करना है कि व्हाट इज द गोल. सो द गोल इज टू segment the customers based on the products they own and some demographic. हिंदी लेते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों ऐड कर लेते हैं. डेटा लोडिंग में हमें जस्ट लोड द हम लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग का डेटा यूज करेंगे क्योंकि टेस्टिंग के डेटा में प्रोडक्ट्स है नहीं. डेटा अंडरस्टैंडिंग में और क्या क्या है, नीड एंड शॉर्ट.
in the selected columns. Okay. Finally, build क्लीनिंग में और क्या आएगा? um, component analysis for dim. इवैल्यूएशन में आएगा हमारा फाइनली. So we want to evaluate, right? So we want to evaluate the customers. uh, we want to do the optimal number of clusters. कितने clusters create करने हैं हमें? 4 करने, 5 करने, 10 करने. We have to get the optimal number. Finally, just we have to explain the clusters. Explain the clusters. Okay. So this is what we want to achieve. All right. So let's start here. Business goal तो हमें पता है. We want to do this. Let's start with the data loading. And before we do that, यहाँ पर we need some requirement.txt नहीं है ना? Let me just add the requirement.txt from the other project that we have here. क्योंकि requirement same requirement.txt. Requirement.txt requirements install. देखिए इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. So hopefully ये जल्दी हो जाए. Depending on the speed of my internet. ठीक है. पैंडस वगैरह है यहाँ पे. Alright. So these are the steps that are involved. PCA करना पड़ेगा हमें क्योंकि dimensionality बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. हमारे columns वगैरह है. K means के लिए we only need the we only need numerical data. तभी हमारा K means हो पाएगा. Okay. So let's just do it a simple K means clustering and let's see here. इसके लिए data लगेगा, right? So let me get the data there. So one product recommendation system. This is the data, right? So we need training data only. We don't need other data. Customer segmentation data, raw data. Okay, so that's the data I have. Training data is enough for us. What else? Documents. So आप लोग के टीम में जितने भी लोग हैं, make sure you add the documentation जिसमें ये steps involved है और steps में क्या क्या कर रहा हूँ मैं, वो थोड़ा सा documentation में add कर देना आप लोग. ठीक है. तो source वगैरह है. Everything looks good to me. यहाँ पर ये क्या है? This customer segmentation Python notebook. Maybe we can use this and get started. Still installing. Okay, जब तक ये install होता है, तब तक anyone has any questions about their projects? Yes, Akshay. जर एक्सेल शीट तर बनवली आहे. हम्म. डायरेक्टरी मध्ये ते प्रत्येक इमेजचं जात नाहीये नाव. दाखवू का मी? शेअर करू का? Yeah. एक मिनिट द्या फक्त मला.
राइट, सो वी हैव बिहेवियरल डेटा व्हिच इज द कस्टमर इंफॉर्मेशन, राइट? बिहेवियर एज इन उनके पास उन्होंने कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू द सेगमेंटेशन। यस राहुल। सर, सायकोग्राफिक सेगमेंटेशन जो पार्ट आहे ना, हम्म, त्यामध्ये कस्टमरचं ओपिनियन वगैरे घेतलं जातं, बरोबर? मग बरोबर तिथे आपल्याला पोलॅरिटी वगैरे जसं आपण सेंटिमेंट अनालिसिस करतो, तो पण पार्ट इथे करावा लागतो का मग? बरोबर, तर ओपिनियन जे घेतो आपण, तो हा. ओपिनियन कसं घेतो त्याच्यावरती डिपेंड करतं. जर आपण ओपिनियन टेक्स्ट मध्ये घेतलं म्हणजे कस्टमर लिहून हम्म, देतो, ठीक आहे, बरोबर. तर एनएलपी करता येईल. जर कस्टमरला लिहून न देता आपण त्यांना दिलं की ऑप्शन, व्हॉट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रॉडक्ट, इज इट गुड, बॅड हम्म, ऑर बेटर, राईट? आपणच त्यांना जर इन्फॉर्मेशन तशी दिली ऑलरेडी, तर मग ओके. ऑब्व्हियसली ते त्यांचं ओपिनियन देतात त्याच्यामध्ये, बट देत आहेत. हा. तिथे काही एनएलपीचा पार्ट नाहीच आहे. बरोबर? ओके. हा, जर त्यांनी काही टाईप केलं कॉमेंट हम्म, रिव्ह्यूज, दॅट ऑल विल गो अंडर ओपिनियन्स. मग ते पोलॅरिटी वगैरे बरोबर. बघावं लागेल तिथे, हम्म, हम्म, हम्म. सब्जेक्टिव्हिटी. ओके. बरोबर, त्यावेळेस तुम्हाला एनएलपी करून करता येईल ते. हम्म, ओके. Still installing. येस अक्षय. स्क्रीन शेअर करू का? हो हो अक्षय. तर दिसती स्क्रीन? नॉट येट. या, आता दिसते. ओके. तर पहिले 83 फोटोज नाही आहेत माझ्याकडे, 86 83. इट्स फाईन, इट्स फाईन. या. बाकीचे आतापर्यंत सगळे मे पर्यंतचे. पण काय होतंय, आता हा जसा डिसेंबरचा आहे आणि जर फोटो मध्ये गेलो डिसेंबरच्या, तर इथून फक्त ही एवढी डिरेक्टरी हे होती, कॉपी होती ही लिंक वरची. हा, तर ते नाव आपल्याला कॉपी करायला लागेल प्रत्येकाचं. मग ते प्रॉपर्टीज मध्ये गेलो बघायला याच्यात, पण तसं होत नाहीये. प्रॉपर्टीज मध्ये जाऊन प्रत्येक इथे वेळेस मला असं लोकेशन परत असं नाही, कॉपी करून पेस्ट करायला लागेल. तिथे नाही, खालती लोकेशन लिहिलंय. हो, ओपन विथच्या बाजूला लोकेशन लिहिलंय. तिथे आहे का ते नाव पूर्ण? स्क्रोल एवढंच येते फक्त, एवढंच एवढंच येते. येते का? हो. हो, मग ते पूर्ण नाव कॉपी करून .jpg असं करायला लागेल. प्रोग्रामॅटिकली करता येईल, बट कळणार नाही ना कुठली इमेज कुठली आहे. आता हम्म. डिसेंबरची इमेज आहे बरोबर, तरी हो, डिसेंबरच्या कोणत्या डेटची इमेज आहे ही फर्स्ट वाली? आता हे अभय अग्र, एक मिनिट बघायला लागेल. डिसेंबर ते अल्फाबेटिकली येते ना, म्हणजे अच्छा. एबीसीडी, हम्म, त्यामुळे हम्म, हम्म, ती वरती आली. हम्म. तिथे कुठेतरी असेल ती 12व्या महिन्यात, डिसेंबर मध्ये. ओके, आपण असं करू अक्षय, सगळ्यात पहिले पूर्ण डेटा एकदम हे करण्यापेक्षा, लेट्स फर्स्ट गेट द डिसेंबर मंथ. फक्त डिसेंबर मंथचे नाव इथे 30-40 असतील ते, बरोबर? बरोबर. हा, तेवढेच घेऊन घेऊ आणि तेवढ्यावरती आपण मॉडेल बिल्ड करून बघू, ठीक आहे? चालेल. हं? बाकी म्हणजे होईल बाकी, पण बाकी जर आपल्याला काही प्रॉमिस दिसलं त्याच्यामध्ये, तेव्हाच आपण पुढे जायला पाहिजे, बरोबर, त्या प्रोजेक्ट मध्ये. चालेल. So let's just get the December data and let's see what output we are getting. And if it looks promising, then we'll see how to get all the data. Programmatically घेता येते ते, but again accurate राहणार नाही ते, कारण ओके, चालेल. मी आज करतोय एक्सेल मध्ये. फक्त एक हा, पूर्ण डेटा करण्यापेक्षा, कारण त्याच्यामध्ये वेळ खूप जाईल, बरोबर? हो, तर थोडासाच डेटा घेऊ आणि त्याच्यामध्ये कसं होतं ते एकदा बघून. चालेल. बरं, असंच करायला लागेल का एक्सेल मध्ये? हो, एक्सेल मध्ये ते सोपं पडेल, नाही तर रीड करायला दुसरं काही ऑप्शन राहणार नाही.
नाही म्हणजे ती घेईल का तसं नाव हो, नाव घेईल एक्सेल ना ते. मध्ये? हो, हो, नाव घेऊन घेईल. एक्सेल मध्ये डॉट जेपीजी असतं ना, डॉट हो जेपीजी हो. पूर्ण लिहायचं पण. ओके ओके कळालं. थँक्यू. या, ऑलरेडी याला वेळ लागतो अजून पण. लेट्स सी. मी रन करून बघतो इथे. आय जस्ट ओपन द टर्मिनल. ओके, झालं आहे इन्स्टॉल. All right, so let's see the EDA that is being done earlier by the team. So we have this EDA, we have this EDA, this 3 EDA. Which one should I open? कशामध्ये सगळ्यात recent आहे? This looks empty. This looks, there's some information here. Okay. What about this one? Same information. All right, let me just create a new one. Create a new one. Python notebook. I'll call this one full run. Again, the same way that we did it for the other team. In this, let me use some information from here. We need to load the data. Obviously, पूर्ण data load करायचा नाही आपण, ठीक आहे? So same thing that we did for the other team, right? So rows is equal to 1000 rows. नंतर वाढवून तो आपण, ठीक आहे? अंदाज अजून होतंय install बहुतेक. Let me just check here. Hello, panel. काय होतं याला? Let me restart this one. So stop, restart the kernel, restart the kernel. No. Let's see. Okay. Already satisfied, collect, installing collected package pandas. I think it's installing this time. आधी काय नाही झालं हे? Check here. Pandas is here. Still didn't get installed. Strange. All anyways, okay, pandas will get installed. Let's go and look at the data. We'll go to the notebook here. The data is Santander. All right. Okay, so this is all the data that we have. Direct debits, pensions, payroll, home, security, taxes, loans, pensions, particular accounts, junior guaranteed saving accounts. Okay, so these are all products, right? हे सगळे products आहेत. So savings account, these are all products. We need the product information, so we need all the columns here. Segmentation, I think most of the data here is 0 and 1 only. We checked last time. Rent column, we'll use this one. What about address? We'll check what to do with this one. Address type, okay, it's okay, we don't need that. Deceased, we'll ignore that for now. Channel used by customer to join, we'll ignore that one. I think we can just ignore this one too. Foreign index, if the customer's birth country is different than the bank country, we'll ignore that. Okay, we'll take this one, same columns, I think. Seniority, age, sex of the person, customer code is the ID. I think we'll not need this one क्योंकि ID से कुछ
काम ही नहीं है हमारा. We are not going to worry about the IDs. We will need most of the data here was A or B something, right? So we'll just need age, sex, uh, seniority, and what else can we take? Rent. Same columns I think that we were using for the other project. So let's just do that. Let's keep it simple. In fact, let me go to the other projects. Yeah, that we have. Recommendation system. Okay, let's go to the source here. Let's use the same columns that we are using here. Still loading. Yeah. Okay, data loading. Just use the folder. So we need the max rows. We don't need test. So I'll just get the column. This code was already explained. Okay, so I'm not going to explain this code again. Okay, we are going to do the full run here, right? Happening now. That goes here. So let's take 10,000. Just okay. So we take 10,000 rows. उसके बाद में columns I said we are going to use the same columns. Let's use the same columns. ये भी explain किया था मैंने. Only thing that will change here is we'll use all the columns here. Okay. We'll not call this train anymore because this is just df data. We'll call it df raw because this is just the raw data that we loaded. We'll get all the data. Uh, 10,000 rows from the training. को load करेंगे and we need all the columns, right? So ये सब column लेने हैं मुझे. So I'll just remove this one. So let's see what's happening here. ये लिया. Let's see. df underscore. We'll call this one to segment, right? Because we are doing the segmentation. तो ये data कौन सा है? df train का, raw का, columns. I want to use these columns, right? What is this fetch date? Do we need this? Not really actually. Fetch date will ignore this one. ID भी नहीं चाहिए हमें because IDs का कुछ काम नहीं है हमें customer segmentation में. Every customer is going to have its own ID, and we cannot segment using the IDs, right? So 1, 2, 3, 4 numbers रहेंगे. Just imagine that. So that is not useful for us. We need sex. We need this one. Age, rent. That's it. Let's just look at this one. What? Save. All right. So we have sex. We have this one's I think seniority, age, rent. Then we have all the products that the customer is using. Okay. Now what I'm going to do here is we'll keep track of things that we're doing. Okay. We already know that we have to do this. Data loading is done. Understanding. We are still doing this one, right? So ओके. तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो प्रोडक्ट्स है मेरे पास, राइट? सो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स. आई वांट टू गेट द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट वेरी रेयर. आई मीन ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लेंगे जो कॉमन है और जो बहुत सारे कस्टमर्स खरीद रहे हैं पहले से. बिकॉज इफ यू ट्राई टू गेट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो लेट्स से आपके पास you have a grocery shop, or products that you have is maybe some pulses, and then you have atta, then you have other things, right? And you, in addition to that, you also have some things which are rarely bought. So what are some things that are rarely bought? Maybe there's a specific color of a nail polish that you already keep. If that is rarely bought, then you don't have to keep track of that. कि उसके लिए आप थोड़ा ना customer segmentation करोगे. You want to get to the customers, or you want to get to the products uh, which are heavily present in your data. ऐसे नहीं कि
कोई भी ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जो ज्यादा लोग यूज भी नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू पुश इट फॉर द कस्टमर्स, देन customers it's not going to add much value, right? So we'll select some of the valuable products from here. How to do that? तो ये डेटा है आपका, ये कॉलम है, ये कॉलम में अगर जीरो है इसका मतलब ये प्रोडक्ट इस कस्टमर के पास नहीं है, राइट? जहां भी वैल्यू इसकी वन रहेगी, दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज ओन्ड बाय द कस्टमर, जैसे कि ये, राइट? सो दिस इज वन, दिस मीन्स ये प्रोडक्ट इस कस्टमर के पास है, ये पर्टिकुलर कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट है. Again, this product is also there, right? So now the issue here is, since we are just loading small amount of data, maybe ऐसा हो सकता है कि इसका डेटा नीचे है कहीं तो, and it will not get loaded when you do enrolls. Okay, so first we'll do a small test to make sure that it works. So I want columns which are 0 1 2 3 4 के आगे, correct? So dot loc loc all the rows 4 के आगे वाले customers. So this is what the data I want. I'm interested in this. Now I'll do dot sum. I think this would work somehow. Yeah, that works. तो जैसे ही मैंने सम किया, उसने क्या किया, ये कॉलम का सम किया टोटल. ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल हियर इसका जब सम किया तब सिर्फ जीरो आया, मतलब देयर इज नो कस्टमर हु इज ओनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जब मैंने इसका सम किया, देन देयर आर 9296 प्रोडक्ट कस्टमर्स हु आर ओनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट is pretty common, this product is pretty common, again this product is pretty common, not very common, but 10% of customers are having this product, right? So I'm not going to have a model built for this product because बहुत कम लोग इसको own कर रहे हैं, right? So now what I can do is, अगर मुझे पता करना है कि what percentage, तो I can just divide this by shape. Products कितने customers हैं मेरे पास, then multiply this with 100. We'll just take a round of this, round it to the nearest two digits. So this is percentage wise. So 92% of the customers are having this one, 92% or 7% are having this product. कुछ इस तरह से डेटा ये अभी हमारे पास, ठीक है? वी वांट टू गेट टू द प्रोडक्ट्स विच जो एटलीस्ट 20% तो भी लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग टारगेट करेंगे. ऑलराइट, तो फॉर अस टू डू दैट, what we can do here is, all right, I think it's fine, we'll just do something manual. So let's change this one to some big number here and let's see what happens. पूरा डेटा लोड हो रहा है अभी, it'll take some time obviously क्योंकि big data. ओह, यहाँ पर वो इशू आएगा आपका मेमोरी का, टास्क का, करेक्ट? वी कैन इग्नोर दैट हियर, वो इशू आ सकता है. वी नीड कॉल्स हियर. आई एम नॉट श्योर मेरे इसमें आएगा कि नहीं वो इशू, बिकॉज मेरे पास है मेमोरी उतनी. I think I'll get that memory issue because this is already running at 14 gigs. See here, memory increase हो रहा है जैसे जैसे डेटा लोड होते जा रहा है. This will get to 15 and okay, yeah, there you go. हो गया पूरा डेटा लोड. I didn't have that issue. Alright, so we don't have to do this one in my case. So as you can see here, the memory is almost touching 15, 16, right? So there's hardly any memory left. I think it will run. If not, then we'll have to, it won't run. 98% तक पहुंच गया ये. This is looking to crash. Yeah, it's okay.
columns here. So to work it out, let's just do this here. तो स्मॉल ट्रिक, हम लोग सबसे पहले तो सारे कॉलम्स ले लेंगे, ठीक है? तो with all columns, I just want to get the list of columns, right? Oh, there you go. Run हो गया मेरा. Yes. Lucky there. Just want these columns. 28 columns की जरूरत है मुझे. Let's run this one now. अभी percentage पता चल जाएगा हमें. All right. So this is the common one. ये 65% लोगों के पास ये product है. This is the second product which is common. This is the third product which is common. This is the fourth one. ठीक है? तो one. All right. So we can do this. इसको code wise भी कर सकते हैं हम लोग. Let me just put this into a variable. Wise is called as product wise correct favorites. Okay. और favorites किसका किसका है? I want greater than, just put 8% for now. So it give me all the products which are greater than that, and ये वो products है which are greater than 8%. ठीक है? I am only interested in these products. 1, 2, 3, 4, 5. I'm only interested in these products. तो इनके नाम ले लेते हैं हम लोग. So dot keys will give me the name. I think so. Sure. Okay, there you go. मिल गया मुझे नाम. ठीक है? So this will give me interested. These are the products in which I'm interested. Uh, let's do one thing. ये जो columns है, okay, we'll update the columns. We'll say columns to use in the modeling. जिसमें हम लोग interested products रखेंगे सबसे पहले. In addition to this, we need these 3 columns too. Okay? ये product ये column भी रखते हैं. And these are the columns that we are going to use. Okay? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने वो प्रोडक्ट्स निकाले जो कॉमन है. आई एम नॉट ट्राइंग टू चेज एनी नॉइस हियर. दैट्स व्हाई कॉमन प्रोडक्ट्स निकाल लो पहले. जस्ट पुट दिस वन हियर. तो जी इस साइड में रखता हूँ. Here. In fact, I don't even have to do this one. Columns to use, right? Do I really need this? मैं इसको segment को, I can just do this. I don't need that. This will give me df2 segment. I'll just update my df2 segment ताकि मेरे पास थोड़ा सा डेटा रहे. And this end here. Let's see. Products. If not head. Error क्या आया? Operands cannot broadcast together. Okay, there you go. Broadcasting नहीं होता है इनका क्योंकि this is something else. This has to be a list like this. List में convert करना पड़ेगा. Now it will work. ठीक है. So now what I have here is, this is the first few columns that I'm going to use. This is the interested product that I want. तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका डेटा. Sex, age, rent कितना है उसका, and if he's owning this product or not. That's all. That's all the information that we need to do the segmentation now. So, all right, let me just make sure I don't miss anything here. तो ये आपका import हो गया, ये आपके end rows हो गए, आपके columns आ गए, product wise favorites आ गए. Segmentation के लिए data आ गया अभी हमारे पास. ठीक है, ये मेरा segmentation का data है. ये 4 प्रोडक्ट्स कैसे सिलेक्ट किए, सबको समझ में आ गया? यस नो? जस्ट कमेंट में डाल दो जल्दी से. यस सर. ओके गुड. ठीक है.
Alright, so अभी ये प्रोडक्ट तो आ गए हमारे पास. Now the problem that we have is there are some missing in this, right? याद है आप सबको? We did some missing analysis for this data earlier. Something. Okay. Missing. Okay. So, yeah, this trend data is missing. इसमें कुछ मिसिंग नहीं है, इसमें बहुत सारा मिसिंग है. इसमें फिर भी मैनेजेबल है 27,000. Same results. So this rent is missing a lot, which is कितना ये missing? 279. So almost yeah, almost 2.3 million data is missing here in rent. ठीक है? Let me just check the shape of this data that I have here. Out of 13 million, 2 million is missing. कितना percentage होता है वो? 2 million out of 13. So that's 15% data is missing. So what I'll do is I'll just remove rent for now because इसमें बहुत सारा missing data दिख रहा है मुझे. Okay? Will not use this particular data. A lot of missings. 10% is a lot. So let's just start with something simple. Okay? आप लोग बाद में rent data include कर लेना. ठीक है? Alright, so let's just clean ये एक column है जिसको clean करने की जरूरत है. We'll just use the same data, same code that was used by the other team cleaning के लिए. किसका clean करना है? Yeah, this is straightforward, right? Fill NA with hack. इसको H से fill करने की जरूरत नहीं है. Let's just do something different here. काउंट करते हैं एक बार. Let's just see. So what we have here is 50 data almost. तो fill NA जब करेंगे हम लोग, in that case we will not fill NA with H directly. We'll just randomly insert values there. ठीक है? So it'll be better if we do something else. The more context, but for now let's just use random. Check random as in from values random. Not between two values. Randomly select from a list. I think this will have it. Okay. Okay, random dot choice. All right. So we will go to the full run. Random dot choice, and the choices are V. नहीं तो फिर. All right. So let me just copy this here. We'll fill NA with this value. All right. So let me put this import on that. Should work now. Dot value counts. Now we have this one. Let's check missing है क्या. Is NA. ने क्या किया, randomly assign कर दी values V या फिर H instead of having a hard coded value जहाँ पे हम लोग
एक तरह का डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, we'll just randomly assign some values, either v or h. So that would also work. Is na dot sum. Let's check any missing data here. All right, so we don't have any missing data now. We are good. तो हमने लोड किया डेटा, हमने कॉलम सिलेक्ट किए, रेंट को सिलेक्ट नहीं किया हमने. This columns are just to get the product wise information. Segment अभी भी सबसेट हो गया यहाँ पर. We got the columns. Now let's here. All right, so let's go back to our sheet. So we did some, okay, we didn't do the data understanding because we had done it earlier. I can just do this. We already know this data, right? There's something else that we need. Dot age का एक बार हम लोग ये देख लेते हैं. Yes. So okay. So there's a lot of people who are in this particular age group, 23 के age group में. There's very few people who are in this particular age group. ये क्या है ये? ऐसा क्यों है? 23, 41. What's wrong with this one? Okay, let me just check the data type of this. Okay, age should not be an object, which is clearly wrong here. Anti dad. This should also be a number, I think. Right. So let's see. अभी oh now I remember. इसको जब मैं age को when I try to convert this into int, I get an error. Error ये है कि yeah this not sex age. NA values है यहाँ पर. इसको fill करना है हमें दूसरे values से. That is why we need that utilities function. Now I remember. Utilities function कहाँ है? यहाँ पर है. Just use this utilities function. Use the same function. Put median के लिए, and that will work for us. Not this one. Where's the full run? ये तो हो गया इसका. That's my utilities function. It will impute things. So remember you guys were asking me कि null और इसकी क्या difference है. तो यहाँ पर क्या है? The value is present in age, but it's an invalid value. What is the invalid value? कुछ इस तरह की value है na, which is an invalid value for age. We need something which is an integer or something which is having a base of 10. All right. So because of that, it is not working. So we have to impute the values for age. That's all. So let's just use the same code that we used here. Imputing क्या करना है हमें? Age, right? कहाँ गया age? Age and ये दूसरा भी column impute कर लेते हैं हम लोग. Where's the full run? See here. Segmentation. Utilities is not defined obviously, but impute function is defined. We'll put it in utilities. It is taking time क्योंकि ये string में convert करेगा फिर impute करेगा. That's why it's taking time. Let's just check. Unary float. Bad operator type for unary float. कहाँ पे error आया ये? यहाँ पे error आया. As type.
डॉट पी टाइप्स ये है, एज है, शी इज राइट, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग हियर। आप लोगों ने फंक्शन चेंज किया क्या किसी ने? ओके, डीएफ डीएफ सही है यहाँ पर, डीएफ डीएफ सही है। लेट मी जस्ट गेट द वैल्यूज हियर। वन डीएफ, सॉरी आ गया ये। इसको डीएफ इज इक्वल टू डीएफ सेगमेंट, राइट? लेट्स जस्ट वर्क थ्रू दिस। पहले let's just get the median value here. Let's see what happens when I run this. Error आया, column name नहीं है। Okay, an error। ये पूरा डेटा लोड नहीं करना चाहिए था मैंने। Bad operand type for unary. Not float. Why is this a float? Dot contains. Give me a second here. रेशमा, आपको ये एरर आया था क्या when you use the full data? How is this even possible? हमने अभी थोड़ी देर पहले NS चेक किया, उसमें there were no NS. Still it's saying that there's NS. Okay. That got fixed. ठीक है। This is this, this. तो हमने इसको क्लीन किया, हमने इसको क्लीन किया। आफ्टर क्लीनिंग we imputed them, we converted them into integers, and we are getting the values back. Let's just wait here, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको इंक्लूड करने के लिए। Okay, let's check the memory here, almost 90%. Oh, again, cannot mask with non-boolean array with na, of course there are missing। इसमें missing data कहाँ से आ गया? You just not checked, right? There's no missing in this one। Just do it। Okay, awesome। Yeah, there's no missing data in here। Okay, so this one is type। So this one। Maybe string में जब no, this is also working। सही है फिर ये। Yeah,
false. Something is wrong here. Let's see if this works. मीडियन वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद में try to assign the median value to this column, change type to float. Everything looks correct. So Reshma, for your team also, make sure you update the function. ठीक है, जो यहाँ पे फंक्शन अपडेट कर रहा हूँ मैं अभी, आप लोग भी फंक्शन अपडेट कर लेना आपका. ओके सर. Yeah, this n is equal to false रखना है शायद से. Alright, now it's working. Somehow. But yeah, since we are loading the full data, so yes. अभी थोड़ी देर पहले तो रन किया इसको. Okay, okay, understood. ये डेटा अपडेट हो गया थोड़ी देर पहले. We updated the data just now. It's giving that error. Okay. तो आपको यहाँ पर n is equal to false रखना है. ठीक है, दोनों जगह पे. फास्ट. एक बार डेटा क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद में मैं डेटा को सबसेट कर लूंगा. ठीक है. प्रॉब्लम विद द डेटा सबसेटिंग पार्ट इज यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज जो फेवरेट है ना वो थोड़े कम हो जाते हैं. स्टिल फाइन. लेट्स जस्ट कीप इट एज इट इज फॉर नाउ. इंटीजर आ गया, ये भी इंटीजर आ गया. अभी लेट्स जस्ट चेक द इज एन ए और सम काउंट चेक कर लेते हैं. नो एन इज. ठीक है. राइट, नाउ डेटा इज क्लीन. आई वांटेड टू गेट द एज और इसका वैल्यू काउंट्स प्लॉट करना था मुझे. डिस्ट्रीब्यूशन देखना था मुझे एज का. This is going to look like this because it's not sorted. This work. ठीक है. What is this? Age. Age कहाँ गया मेरा? इसको बहुत टाइम लगता है क्योंकि data is just too big. I should not do this one. Stop this. Please stop. Um, we just look at the quantiles and we'll get. Yeah. Not. And alright, let me do one thing. यहाँ पे ना डेटा को बहुत टाइम लग रहा है. So what I'm going to do is I'm going to do a subset here. So after I read the rows, after we get to this step, जब मैं पूरा डेटा लोड कर लेता हूँ, मैं df सैंपल कर लेता हूँ. सैंपल और सैंपल फंक्शन कहाँ गया? and as sample data frame function documents and number of items from the axis cannot be a fraction. ठीक है.
n is equal to, let's just put this 10,000 and मैं इसको किल करना पड़ेगा मुझे because this one was a mistake. And, pandas लिया, numpy लिया, I'll load the full data, it's fine. Get the sample out of it, get at least 10,000, it's still fine. We don't need more than that. जब ज्यादा लगेगा तब we'll just rerun the whole thing. Okay, favorite products ये change हो सकता है अभी, but that's fine too. Imputing भी चल जाएगा अपना. Let's just stop करता हूँ पहले इसके लिए. Kill the kernel. Here. Restart. Okay, that's fine. Okay. Restart this one. Reload for me. Okay, there you go. एक बार ये run हो गया. Let me just run this from top to bottom. So go here, right click. One by one करना चाहिए. Okay, अभी क्या हो गया इसको? DF rows नहीं यहाँ पर है. Yes, we got unexpected. इसकी जरूरत नहीं थी ना हमें. Just forgot all the things. Alright. तब तक ये रन होता है, तब तक let me just go back here and create the files for you all. तो ये आपका प्रोजेक्ट है. This is where the source is going to be. Let me create a utilities file for you. New Python file utilities.py. Utilities.py. Let me add it here. Utilities.py में सिर्फ एक फंक्शन जाएगा, which is this one. Here it works. एक चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये रन हो रहा है ना. Let me just check one thing here. I want to check if the data type is string or not, ताकि ये function run ना हो if it's not a string. I'm assuming that यहाँ पर string functions ही आ रहे हैं, ठीक है. Data cleaning यहाँ पर आ गया. Let me create one more file here, which is called as full run. I'll just keep it in full run. You guys have to work later on it, ठीक है. Full run.py. इसमें import करो. Let me add this one. Import. Let me do one thing. यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, data loader. ठीक है. Data loader. डेटा लोड करेगा हमारा. We need this. Add it. डेटा लोडर में ये ऐड कर दिया. उसके बाद में this is what the code is here. Load. I'll just define load data. Max rows को मैं यहाँ पर रखता हूँ, ऊपर डिफाइन करके रखते हैं इसको. In addition to that, I need to get data. df raw and rows. I'll just sample. This is hard coded. I need to change this. तो यहाँ पर एक common practice होता है, to do ऐसे लिखना होता है. Change the n to remove n, ठीक है. बाद में n को रिमूव कर दिया जाएगा. Just
All right, let me just do one more thing here. Products, interested products, कोई products का data चाहिए मुझे. Product wise favorites, interested products, get the segmented data. That's my segmented data. Input का हो गया काम. This is the data cleaning part, right? So data loader. I'll just rename this to. Let me rename this file. कहाँ गया? Rename. I'll rename it to something else, which is data. I'll call it data layer. Okay. It will do a couple of things, which is loading the data, and it will also do cleaning the data. Okay. Data. Load function, clean function, clean the function. इसको input जाएगा मेरा data df, and cleaning में क्या क्या processes है हमारे. First thing is ये clean करना है. Second is imputing वाला clean है. This one has to be utilities. Remember, utilities में ये function है. Import utilities करना पड़ेगा यहाँ पे. Import utilities. Utilities में वो function है. Utilities dot impute. Utilities dot impute. This function will return clean version. Return clean version. This is the data loader. This will return the loaded data. Return clean version. ठीक है. तो information. Of them. ठीक है. Load data हो गया. Clean data हो गया. What is this error? No new line after the end. That's not an error. That's a warning, but it's fine. यहाँ पर एक और warning मिल रही है मुझे. I'm not adding any comments. ये comment ये जो comments आपको add करने हैं. ठीक है. तो data loader data layer है. What I'll do is I'll import data layer here. ठीक है. और data layer में से data layer dot load. data load हो गया. Yes. के बाद में data layer dot clean हो गया. clean में क्या करना है? ये भेजना है. So just get the clean. df clean. Okay. Right. So this looks good to me. अभी क्या करना है हमें? हमारा जो ये फाइल है पूरा, जहां पर हम लोग क्लीनिंग वो सब कुछ कर रहे हैं ना. I'll just show you an example. वो आपको इस तरह से दिखेगा. इतना ही दिखेगा. एक डेटा लेयर लोड करोगे आप, जिसके अंदर आप df लोडेड और df क्लीन लोगे. ठीक है. अभी के लिए I'll just call data clean as this one because this is the cleaner version of my data. All right. Move on. उसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ी देर में. ठीक है. Alright, so we have 10,000 rows, 10,000 rows, 8 columns. एक बार जल्दी से इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं. डिस्क्राइब डिस्क्राइब दिस. इसका एज का देखना था हमें. एज का मीन इज 40, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 17. मतलब देयर आर पीपल हु आर okay. There's one more problem here. Some people are having a mean age of 2, which is wrong, right? Because you'll at least maybe the products are like that, but I'll just keep it उसी तरह से. ठीक है. I'll not work on this one. Max, everything is good. Building the project, building the models now. Okay, so data understanding में we selected the columns, we shortlisted them. We selected shortlisted. data cleaning में हमने data को clean किया. This is done. One thing is missing, which is this PCA part. Okay, ये PCA के लिए हमें क्या करना है? ये जो डेटा है हमारा, इसमें सारा डेटा
हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, या तो न्यूमेरिक फॉर्मेट में चाहिए या फ्लोट, समथिंग न्यूमेरिक. ओके, दिस थिंग इज इन ऑब्जेक्ट. नाउ वी ऑलरेडी नो ये जो कॉलम है सेक्स, this column is having only two values in it, right? H and V. So what we can do is, firstly I'll just show it to you all. Counts. इसमें just दो ही values हैं, right? So what I'm going to do is, let's dot get dummies, dummy variables ले लेते हैं. Okay, true false true false. Drop. Just याद नहीं रहते हैं. Yes. इस डॉक्यूमेंटेशन में ही जाना है हमेशा, कहीं और नहीं जाना है. ठीक है. When we get the dummies, drop the first. Okay, which is by default false, so I need to make this true. I just do this, drop first is equal to true as type. So there you go, and this is for my sex column. ठीक है, ये मेरा सेक्स कॉलम जो है उसको मुझे कुछ इस तरह से नाम देके रखना है, so that this is also part of a data cleaning only because I want all the columns into numeric values. एक बार मैं ये कर देता हूँ, my data becomes clean and my columns I have are all numeric. Okay, ये सब न्यूमेरिक कॉलम्स है, इस पे मैं पीसीए कर सकता हूँ. ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट मूव दिस वन इनटू आवर फंक्शन व्हिच इज इन द डेटा क्लीनिंग में जो है एज में सेगमेंटेशन हियर डेटा क्लीन. यहाँ पर लैप्स करता हूँ मैं. क्या किया यहाँ पर मैंने क्लीन में उसको कॉपी कर दिया. व्हाट आई एम डूइंग हियर, able to do the segmentation or PCA. Okay, correct. ये आपका फुल रन है अभी तक. Load the data, clean the data. Okay. All right. Now how to do PCA, right? So let's just look at examples of PCA. Forget the code PCA in sklearn. PCA is usually time-consuming process, so good that we have only small amount of data. Okay. So we have some examples. यहाँ पर PCA कैसे करते हैं उसका. Number of components will just tell कितने components चाहिए हमें. Think this is explained variance is going to be helpful. Okay, so first thing we do is let me just check here. We'll do a normal PCA, कुछ complex नहीं करेंगे हम लोग. So we need to import this thing here first. So we need to import PCA. PCA is getting import. We'll fit the PCA model by doing this. Why is it copying again and again? Same thing. Prompts. Run this here. Oh, come on. Copy. That's the PCA. PCA को load किया मैं. I want to fit on this df clean. That's what I want to do. What we get here. Okay. So we got two principal components. पहले ने 95% explain किया, दूसरे ने 0.004. I think we are good. We just need two. We don't need more than that.
because most of the data is getting explained by the first principal component. Second one is not even needed. Only 4% is getting explained by the second, right? So 95% variance is captured, or the information is captured by the first one. 4% is captured by the second one. What is the sum of this? Top two are going to capture almost 99.99%. So we are good. We don't have to. Right. Now, there is a problem here, which I would like you all to think. What is the problem of this particular approach? यहाँ पर मैंने PCA किया इस डेटा पे. What is the problem? मैं डेटा पे PCA किया, डेटा को क्लीन किया, and I'm doing a PCA. What is the problem? There's an issue. I have talked about that issue earlier. There's an issue the way I did the PCA. What's the issue? Anyone can think what the issue is? Literally writing things on the screen. Can you think what's the issue? Anyone? PCA करने के पहले क्या करना होता है हमें? PCA करने के पहले क्या करना होता है हमें? तो याद है क्या PCA करने के पहले क्या करना होता है हमें? स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है हमें PCA करने के पहले. Yes, no. Yes or no? Yes, sir. Right. So that's what I'm doing right now. PCA करने के पहले we have to standardize the data. What I did just now. Now you'll see the problem suddenly. जैसे ही मैंने डेटा को स्टैंडर्डाइज कर दिया, थोड़ी देर पहले मैंने डेटा को स्टैंडर्डाइज नहीं किया था, तब कितना वेरिएंस एक्सप्लेन हुआ था? 99 And suddenly why is this drop? इंफॉर्मेशन लॉस होता है ना PCA में. But I didn't. मैंने PCA में कुछ चेंज नहीं किया, मैंने डेटा को चेंज किया सिर्फ. पहले 99% डेटा मिल रहा था मुझे, लेकिन अभी 47% ही डेटा मिल रहा है. 47% ही इंफॉर्मेशन मिल रही है इस पर्टिकुलर डेटा सेट से. So that was the effect of not normalizing the data. जब मैंने डेटा को normalize नहीं किया, there was one variable which is this age, or which is this other variable which was dominating the variables which are present in these products. ठीक है, इनको dominate किया जा रहा था, जिसकी वजह से you, अगर if you are explaining age, if you are getting all the information about the age in your PCA model, that means the model is capturing all the information. ऐसे लग रहा था हमें, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा था. लेकिन जैसे ही मैंने उनको नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइजेशन के बाद में क्या हो गया डेटा का? as soon as I do the normalization, what happened? Let's just do the describe here. तो अभी कंपोनेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे ना. इस कंपोनेंट बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जब हमने किया, तब we brought everyone into the same scale.
because of which we have this cleaner data now. Okay, this is the correct way of doing PCA. All right, so we need to increase the components. Okay, four components still no. Now 1 2 3 4 5 6 7 7 तो कॉलम्स है आपके पास. ओके, एंड इफ यू हैव 7 कॉलम्स और अगर 5 कॉलम्स तक भी आपका पीसीए नहीं आ रहा है, 7 कॉलम्स, 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 okay, 8 columns. You have 8 columns. After capturing 7 columns, you are getting a 95% information. ठीक है, जब आप 8 के 8 कॉलम्स कैप्चर कर लेते हो, at that time you get a information of full. But let's just, आज तक कितना आता है? 82%. 4 तक कितना आता है? 72%, right? So this PCA करने के बाद भी I'm not able to maintain all the information. Okay, so the PCA that I'm going to do here right now is only going to help me do one thing, which is डेटा को 2 डिमेंशनल में मुझे विजुअलाइज करना है. इसी के काम में आएगा ये पीसीए, नथिंग मोर देन दैट. ठीक है, तो बिकॉज आई डोंट हैव मेनी कॉलम्स, और यहाँ पर कॉलम को रिड्यूस भी करने की उतना जरूरत नहीं है, बिकॉज ओनली 8 कॉलम्स आर प्रेजेंट. इफ वी हैड लाइक 20-30 कॉलम्स, उस टाइम पीसीए कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो लेट्स जस्ट कीप दिस प्रोसेस एज इट इज. वी ट्राइड दिस, बट even after going till 7 or 8, कितना आ रहा है? See, at 6 we are getting just 90% information. So we'll skip this one. We'll keep, we'll not use PCA, and we'll just do the k-means directly. Okay. K-means. Okay. Just move this one. It's the model we need. K-means model. Okay. I'll show you how that PCA is going to be helpful. ठीक है, don't. यहाँ पर X नहीं है, यहाँ पर हमारा DF clean है. Okay. Building model, getting the labels, predict. It's fine. We don't need this one. Cluster center is something which is bad. Labels are also important for us. Labels. तो वी वांट टू अचीव दिस पार्ट हियर, राइट? तो हमें क्या करना है? क्लस्टर्स तैयार करने हैं, और वो पीसीए यूज करके वी वांट टू विजुअलाइज दोस क्लस्टर्स. ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. We need the labels. Let's run this one. So this is the cluster center. मतलब जो क्लस्टर्स क्रिएट हुए, मेरे 2 क्लस्टर्स जो क्रिएट हुए, उनके ये सेंटर है. So this is the center point of first cluster. This is the center point of the second cluster. ठीक है, and if I want to check उनका डेटा कौन से क्लस्टर को बिलोंग करता है, that is present in this particular variable. This variable will tell me that if ये internal variables होते हैं, इनको change नहीं करना होता है. Okay, you should never do this is equal to something else. ऐसे कभी नहीं करना है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर underscore included है. They are supposed to be they are supposed to be accessed, but they're supposed to be not changed. You will also see underscore underscore like this sometimes. ठीक है, सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट. जहाँ पे अंडरस्कोर दिखता है ऐसे एंड में या फिर शुरुआत में, यू आर नॉट सपोज टू एडिट देम. So we have this k means. What we want to do is we want to do an elbow plot. ठीक है, so let's just find.
kilometer. K means I forgot the code actually. It's been a long time. So what are we doing here? Okay, K means clusters, tens, K ka inertia liya. Okay, yeah, I think we can use this. K means labels, data clusters. This is going to give me something like this. Inertia. All right, I think I can use this one. I'll explain the code to you all. Okay, don't worry. ये कोड में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो सम ऑफ स्क्वायर एरर्स है यहाँ पर, तो मुझे प्लॉट बनाना है। ये प्लॉट से ये पता चलता है कि सम ऑफ स्क्वायर एरर कैसे कम होते जा रहा है धीरे धीरे। जब मेरे पास एक क्लस्टर था तब मेरा सम ऑफ स्क्वायर एरर इतना था, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर एरर मींस मेरे सेंट्रॉइड से कितना डिस्टेंस है एवरी डेटा पॉइंट का, उनका समेशन। ओके, जब मेरे पास एक क्लस्टर था तो लेट्स सी दिस एग्जांपल हियर। जब मेरे पास एक क्लस्टर था, लेट्स से व्हेन आई ओनली वन क्लस्टर, इफ दिस इज द सेंट्रोइड समवेयर हियर, तो सबका डिस्टेंस का जब मैं एडिशन करूंगा ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा वो, ठीक है। अगर मैं 3 सेंट्रॉइड्स बनाता हूँ, देन आई चेक, ओके दिस दिस इज माय फर्स्ट सेंट्रॉइड, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ के इन सबका समेशन, ठीक है। प्लस ये सेकंड सेंट्रॉइड है, फिर सेकंड सेंट्रॉइड का सिर्फ उसके क्लस्टर में के डिस्टेंसेस, थर्ड का उसके क्लस्टर्स में के डिफरेंट डिस्टेंसेस, ठीक है। तो बाय डूइंग दैट आई एम reducing the sum of squared errors here. SSE they call it. ठीक है? It's not exactly the error. It basically is how far are each data points from your cluster center. ठीक है? Cluster का center है, उससे कितना दूर है आपका? तो I think inertia concept है वहाँ पे. Inertia is basically how far they are. Sum of the distances from the closest cluster center. ठीक है? That's all it's being done here. So let's just do this. We need data here. We have not imported plot which will be required for us. Just use this one, right? Obviously won't work because I need this to be df clean. Okay, number of clusters बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी there is no elbow here. Let's just try maybe more clusters. Let's just try too many. 100 is too many clusters. Okay, you should never have 100 clusters actually. It should be 30, but not more than that. Okay, let it run. Okay, जब तक ये रन हो रहा है तब तक लेट मी डू वन थिंग, ठीक है। लेट मी जस्ट गो टू योर कोड हियर और यहाँ पर एक मॉडलिंग का फाइल बनाता हूँ मैं, ठीक है। इसमें ऐड करता हूँ मैं। I'm going to just import my models that I'm going to do. I want next thing is um, all right. Next thing is just build the schemas. Okay, this is what my build is doing. Clean आएगा इसको. This is not even required because k-means का तो code यही है. Random state is something which might be useful here. Let's see code कैसे evolve होता है अपना. After that we'll decide if we need a file or not. Yeah, there you go. So यहाँ पर आपका जो elbow plot है, right? So your elbow plot is looking to reduce
somewhere here, right? कुछ यहाँ के आसपास. इसके बाद में you'll see a sudden drop here, or you'll see a drop after this one, which is slowly reducing. यहाँ पर quickly reducing, and suddenly there's high reduce. I mean, it's reducing faster on this side. Like I said, 100 is too much. 20 tak we can stop. We don't need 100. Max iteration. Just reduce this one. Okay, means 20. 20 is still too many. 15 is okay. What's wrong here? Okay. I need more iterations. Okay. Better. 15. Let's try. Maybe 10. Okay. Let's try. Just have 5. Okay, I think it looks clear. Okay, I'll just explain to you all. चल क्या रहा है? What I'm trying, I'll just show it to you all. What I'm trying is, I want to see 8 पे suddenly it looks like this. What happens if I do a 10? Okay, so what I'm trying to do is, ये drop हो रहा है, उसके बाद में कहाँ पे ये slanting जा रहा है थोड़ा थोड़ा, which is यहाँ पर clearly दिख रहा है इस particular example में. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप यहाँ पर आया, फिर थोड़ा सा स्लैंट हुआ, फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा ऐसे मतलब फ्लैट लाइन की तरह दिख रहा है इसके बाद में. ओके, इन आवर एग्जांपल इफ वी सी अ ड्रॉप हियर, देन वी सी अनदर ड्रॉप, एंड आफ्टर दैट वी सी इट looking like a slanting line, or it's not increasing. Okay, so maybe we can pick 3 or 2. इन दोनों में से कोई तो वैल्यू हम लोग पिक करेंगे, and we'll just create those many number of clusters. Okay, so just for the sake of simplicity, I'll go with 3 here, or 2 also can be picked, by the way. Okay, so let's just say that the optimized number is 2 for now, and we'll build a model which is a k-means model for those 2. Labels दे देंगे हम लोग. I'll just show it to you all. तो ये optimized numbers है, तो this is your optimized. Random seed रहने दो, and init रहने दो. Okay. Filters is not required actually. Why do I put this max filters here? यहाँ पे leave everything out, right? Yeah, still same. Okay, anyways, I'll use 3 here. ये मेरे labels आ गए. Now मेरा जो data है, मेरा जो clean data है, इसको मुझे बताना है कि who belongs to which cluster. Okay, so I'll just call it cluster, and I have the clusters now. Show you. ये जो df है ना, value. तो अभी क्या हुआ है? नाउ आई डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग. मेरे डेटा को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है. एक क्लस्टर में है 5000 रोज, दूसरे क्लस्टर में है 3629, और एक लास्ट क्लस्टर है सबसे छोटा क्लस्टर जिसमें 1100 रोज या फिर 1100 कस्टमर्स. ओके, सो दिस इज माय सेगमेंटेशन. नाउ देयर आर 3 सेगमेंट्स इन माय क्लस्टर, इन माय डेटा, एंड दिस इज हाउ माय सेगमेंटेशन इज लुकिंग. ओके, ऑलराइट. इसके बाद में हम लोग ये पीसीए जो हमने यहाँ पर किया था, we'll just use this PCA part here. PCA, we'll build a PCA model, and we'll just दो components लेते हैं. df clean is still fine. And हमें df clean का cluster column नहीं use करना है. Okay, so let's just make sure cluster column is not getting used. Okay, cluster column is getting used here. Not all, but not ILOC.
लास्ट वाला कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ओके, -1 नॉट वर्किंग। जस्ट चेक, अभी यहाँ पर क्या मिला हमें? वी गॉट द नंबर ऑफ कॉलम्स, डू नॉट इंक्लूड दैट लास्ट वन। ओके, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर हमने कॉलम्स पहले से ही लेके रखे हैं ना कहीं, तो you have the column names, but that won't work here. So what I want to do is, I don't want to select this clusters column. I want to select all other columns. Okay. So df here, right? df df clean. Don't get me all the columns. Only get me df. What? That'd be a bad way to do it. थोड़ा जल्दी जल्दी करना है इसलिए for all in if all not equal to cluster. All right, ठीक है. How is this changing? Why is it changing so many times? Uh, okay. वही थोड़ी देर पहले 47 था ना ये? नाउ आई नो, इस पर डी ये चाहिए, you have to PCA. नाउ इट्स वर्किंग. तो अभी मुझे क्या करना है, ये दो पीसीए के वैल्यूज है. आई मीन आई जस्ट टुक टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, आई वांट टू प्लॉट दिस. ठीक है, तो आई वांट टू प्लॉट दिस. This one, plotting the PCA comparison. Okay, mini batch clustering. I don't need to do so much search here. Df dot fit. नहीं, with the values चाहिए मुझे. What is happening here? The values, right? See. PCA data. 01. Okay, there you go. Okay, this will return me two objects, which is one is the original and second one is uh, oh man, where's the fit? यहाँ पे fit नहीं कॉल किया क्या? PCA data, that's all. There's no fit here. कुछ तो गड़बड़ है.
Okay, PCA dot fit transform. Okay. All right. Let's put this one here. See, below here. This is okay. This one. Okay, I got the PCA fit transform X new. यहाँ मुझे DF to PCA. चाहिए X new. Y is not explained obviously because Y should be DF clean clusters. These are my clusters that are created. Okay, so there are 3 clusters I created. First cluster is yellow. Second, okay, something is wrong here. Legend नहीं आया. Give me a second, guys. Sorry. Okay. Give me a second. Sorry. Yes. सही है. 832 इतने क्लस्टर्स क्यों तैयार हुए मेरे? अभी थोड़ी देर पहले भी चेक्ड इट, राइट? क्लस्टर्स 3 ही क्लस्टर्स है. ओ, क्लस्टर है उसका. क्लस्टर्स कहाँ से आ गया यहाँ पे? I think there's some mistake happening here. Give me a second, guys. DF clean कहाँ तक है हमारा? We have this DF clean till here. Segment DF clean. कहीं तो मिस हो गया कुछ तो. So this clusters, right? So we need, yeah, there you go. We need cluster. We have 3 clusters now. There you go. येलो कलर का एक क्लस्टर है, एक ग्रीन कलर का है और एक ये डार्क मरून कलर का है. ठीक है. We still don't know what exactly are these clusters. I will just clean some of this code. It has become a mess here right now. So let me just clean some of the code. Okay, this it needs to do a PCA करके. I just want to plot it, right? So this is my DF clean. DF clean लेके cluster लेके find to cluster plot करता हूँ. This is different because I do it something like this. Now random shit. The output never changes. रैंडम स्टेट लिखते हैं हम लोग ताकि हमारा आउटपुट चेंज ना हो. अगर कोई और रन करता है तो फिर किसी और को अलग आउटपुट आ सकता है. तो वी जस्ट सेट अ रैंडम स्टेट. ओके. Yes, we have three classes. That's fine. Okay. Okay. Actually, my head is spinning. Alright, so we have this imports. यहाँ से फिर हमने data load किया. We did everything. We did the clusters. We built the clusters. हमने clusters यहाँ पे create किए. 5000, 3000, 1000. We got the data clean here. Okay.
me just what do we want to do here? So we did the PCA only to plot, okay, but not to uh, do the clustering. Build the clustering models, which is done. This is evaluation. Evaluation also was done. We selected 3 as the most as the best number of clusters using that elbow plot. Okay, this is not done yet. Explaining the clusters. All right. Yeah. Now I have. Okay. So what we'll do is we'll move the code to our project here. So build the k-means model. This इसको क्या लगे इसको क्या क्या चाहिए input? N number of clusters चाहिए input. Random state चाहिए. Okay. Let's not call it build k-means. We'll call it. Okay. ठीक है. तो define cluster. ठीक है. Modeling में हमें cluster करना है और इसको df clean आएगा. Based on that, we already know best model is 2. Sorry, not 2, 3. And we'll use that to build the clusters. Okay. Cluster होगा यहाँ पे best model use होगा फिर best number of clusters is 3. Random state is that. Fit is there. df clean is there. We got the k-means. We need to get the clusters now. इसको clusters result return करना है मुझे. So I got the clusters using this labels, right? Return labels. Okay, this will give me the clusters. All right. फुल रन में जाऊंगा मैं. df clean हो गया. क्लीन में क्या क्या है? सब कुछ क्लीन हो गया. फिर मॉडलिंग में डेटा लेयर में हम लोग क्या करेंगे? पीसीए कर लेते हैं. ठीक है. प्रोसेस द डेटा. ठीक है. यहाँ पर हम लोग लेके सॉरी हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं डेटा का. ठीक है. लेट मी जस्ट नॉर्मलाइजेशन का कोड कहाँ लिखा मैंने? दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कोड, राइट? सो आई जस्ट गेट रिटर्न normalized data frame. Okay. So this is my df2 seg को नॉर्मलाइज करके मैं रिटर्न करूंगा यहाँ पे. रिटर्न. ओके. सो दैट इज माय प्रोसेस पार्ट. फुल रन में जाऊंगा. फिर डेटा लेयर डॉट प्रोसेस. प्रोसेस में क्लीन भेजूंगा. गिव मी क्लीन वर्जन अगेन बैक. ओके. एक बार ये हो गया. उसके बाद में आई वांट टू बिल्ड द मॉडल नाउ. सो मॉडल बिल्डिंग के क्लस्टर है. तो df clean, I'll call this assign cluster. ठीक है. assign assign करने की जरूरत नहीं. Let's just get the cluster maybe. I think it's fine. Not make it more complex. Cluster है and this cluster is equal to modeling input modeling and modeling dot cluster. Return it to me. यहाँ पर ये कीमेंस की जरूरत नहीं है एक्चुअली हमें. We don't need this model. You already know. हमने जब ये किया नोटबुक में ईडीए किया तब हमें पता चला कि 3 is the best model or 3 is the best number of clusters that we need. We're just doing that. यहाँ पर. Okay. So all of this should run. टर्मिनल में जाओ. प्लस साइन करो. क्लिक. दिस विल रन बट हमारा ये रन हो रहा है ऑलरेडी यहाँ पर. इसकी वजह से ना टाइम ज्यादा लगेगा.
think you are getting the full data, right? So let me just go to the load और यहाँ पर number of इसको कम कर देते हैं 10,000 and see what happens. This one. Uh, क्लस्टर में df clean सेंड करना है मुझे. Okay, there you go. ठीक है. I'll show you example, debugging का example दिखा रहा हूँ मैं. This will be useful for everyone who is doing the coding. ठीक है. मैंने क्या किया, यहाँ पर पास लिखा और यहाँ पर क्लिक किया. इसकी वजह से मेरा एक रेड कलर का आइकन यहाँ पर ऐड हो गया. आई एम डूइंग अ राइट क्लिक नाउ. आई डू अ डीबग. डीबग करते ही क्या होगा, कोड रन होगा और बराबर यहाँ पर जाके स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. इट विल कम एंड स्टॉप हियर. एज सून एज इट स्टॉप्स देयर, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स है सारे वेरिएबल्स आपको राइट साइड में दिखेंगे. df clean, df loaded, right? So this is df loaded, this is df clean. अगर आपको देखना है df clean, you can click on this view as data frame. इसको आप क्लिक करोगे तो आपको डेटा फ्रेम कुछ इस तरह से दिखेगा. Let me attach it back to, इसको अटैच करते हैं कहीं तो. It's not getting attached. That's fine. तो ये आपका क्लीन डेटा है, राइट? तो ये आपका सेक्स कॉलम है, ये आपका एज कॉलम है. यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिया क्योंकि बाकी प्रोडक्ट फिर लेस देन 10% समथिंग लाइक दैट, इसलिए एक ही प्रोडक्ट है आपका. जब हम लोग फुल डेटा पे रन करेंगे तब 4 प्रोडक्ट आ जाएंगे. ठीक है. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, वी टेस्टेड दैट ऑलरेडी. यहाँ पर 3 क्लस्टर्स तैयार होने चाहिए. 3 क्लस्टर्स तैयार हुए. दिस इज क्लस्टर 1, दिस इज क्लस्टर 2, फिर एक और क्लस्टर था आपका विच इज क्लस्टर, ये दूसरा क्लस्टर है. ठीक है. So now this much is running. इतना पार्ट हमारा रन हो रहा है. Now what I'll do is I'll copy this. ये जो कस्टमर सेगमेंटेशन का नोटपैड है, सॉरी नॉट दिस वन, ये फुल रन का जो नोटपैड है, I'll just save it as it is. इसको कुछ करूंगा नहीं मैं, but I'll start a new notebook, okay? Because this particular notebook is a mess right now. ठीक है. I want to do this part here. ठीक है. ये पार्ट करना है मुझे एक और नोटबुक में, जिसकी वजह से मेरा I'll call it new Python notebook. This time I'm going to call the notebook as cluster understanding. Okay. Cluster understanding. I'll rename this one. I'm going to do a cluster understanding here. Okay. Before I do that, मैं क्या करूँगा, जो clusters का data है ना, I'll just save it into a CSV dot to CSV, or this should go into my data slash clustered data dot CSV. ठीक है. Let's go to the data load now, or I'll just increase this to kitna, this is 1 million. Okay, I think 1 million. Okay, we can do this. All right, let me just explain क्या कर रहा हूँ मैं. सबसे पहले डेटा को लोड किया, डेटा को क्लीन किया, फिर से प्रोसेस किया, क्लस्टर्स असाइन किए, और जो भी मेरे क्लस्टर्स असाइंड हुए उन सबको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया प्रोसेस में. डेटा फोल्डर के बारे में मैंने बताया था आपको. रॉ डेटा यहाँ रहेगा, प्रोसेस डेटा यहाँ रहेगा, फाइनल डेटा यहाँ रहेगा. तो आप या तो प्रोसेस में रख सकते हो या फिर फाइनल में रख सकते हो. ठीक है. ये जो प्रोसेस के बाद वाला जो डेटा है इसको भी आप प्रोसेस में रख सकते हो बाय द वे. ठीक है. तो मे बी आई जस्ट पुट दिस इन फाइनल फॉर नाउ. दिस इज फाइनल डेटा जो हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे क्लस्टर एनालिसिस के लिए. ठीक है. सो आई जस्ट डू इट टिल हियर. All of this is not required. Just run this whole thing now.
रन जब हो जाएगा तब मुझे डेटा मिल जाना चाहिए फाइनली। कॉलम 15 है मिक्स्ड। यहाँ पर एक डेटा आ गया आपका, ठीक है। सो दिस इज 1 मिलियन, बहुत बड़ी फाइल है ये, विल नॉट लोड द होल थिंग। वन प्रॉब्लम हियर इज इंडेक्स फॉल्स करना था। दिस इज व्हाट आई से व्हेन आई से कि आपका एक एक रन करोगे फाइल तो पूरा आपका प्रोजेक्ट रन हो जाना चाहिए। क्या हो गया यहाँ पर? मॉडलिंग फुल रन। Input X contains NaN. Okay, ये this is a new error. कहाँ पे आ रहा है ये एरर? फुल रन पे आ रहा है, राइट? मॉडलिंग में आ रहा है। So this is where the debugging is helpful. Okay, I'll just do the debug now. Debug करते हैं इसको, देखते हैं क्या हो रहा है। It should not happen क्योंकि हमने इसको रन किया पहले ही। Clean और some. See, there's no NA here. Issue is how it works. Strange. ठीक है, so let's just proceed. All right. I think अभी रन हो गया वो सक्सेसफुली। आई डोंट नो पहले एरर क्यों आया था, बट विल नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर। आई वांट टू शो यू समथिंग एल्स। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, ये रन पूरा किया और मैंने फाइल को सेव कर दिया। आई वांट टू गेट हियर दिस क्लस्टर अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उसको इंपोर्ट करूंगा। वो जो फाइल मेरी सेव की थी मैंने, उसको इंपोर्ट करूंगा मैं यहाँ पे। और इंपोर्ट स्लैश फाइनल प्रोसेस्ड। तो ये मेरे क्लस्टर से अभी, ठीक है, ये मेरा डेटा है एंड दिस इज क्लस्टर डेटा। अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज है, ये सारे वैल्यूज नॉर्मलाइज्ड है। आई नीड टू गेट द ओरिजिनल वैल्यूज बैक, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वैल्यूज अगर मुझे बैक चाहिए होंगी तो आई नीड द आईडीज। जहां पर आई नीड द कस्टमर आईडीज, करेक्ट। ऑलराइट, लेट्स डू दैट नाउ। तो ये जो डेटा क्लीन है हमारे पास, ये डेटा लोडर है, इसने डेटा को लोड किया, सारे वैल्यूज से लोड कर दिए इसने, लेकिन आई नीड द आईडीज, राइट। व्हाट आई कैन डू इज, ये जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा को मैं सेव करके रखता हूँ। प्रोसेस है ना, यहाँ पर क्लीन हो गया। क्लीन होने के बाद में वी हैव सेक्स, वी हैव एज, एवरीथिंग, बट वी डोंट हैव डेटा प्रोसेस्ड हियर येट। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर एक इन वर्जन है तो CSV करके रखता हूँ so that I can access it later. This is my unnormalized data.
प्रोसेस में रखता हूँ मैं, प्रोसेस्ड नॉट ऑर्गेनाइज्ड। A little bit intelligent here. इसको ये भी करने की जरूरत नहीं है। What I'll do is I'll get the clean को यहाँ भेजा मैंने। I'll just call this not normalized, and I'll just do this not normalized. This is normalized और यहाँ पर normalized डेटा को सेव करता हूँ मैं। ओके, थिंक दिस मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नॉट नॉर्मलाइज्ड लिया। ये डेटा मुझे नॉट नॉर्मलाइज्ड डेटा देगा, लेकिन क्लीन डेटा देगा, करेक्ट। उसके बाद में जब मैं प्रोसेस करता हूँ, प्रोसेसिंग में कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम क्या है, ये जो एज है, जो पहले 1 2 3 4 कुछ तो था, मीनिंगफुल था, तो मीनिंगफुलनेस चला गया उसका। नाउ आई हैव समथिंग विच इज नॉट मीनिंगफुल फॉर मी। आई वांटेड टू गेट बैक, मुझे वापस चाहिए वो वैल्यूज जो मीनिंगफुल वैल्यूज थी वो, ठीक है। इसीलिए मैं उनको वापस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। वन मोर प्रॉब्लम हियर इज, ये जो सिक्स कॉलम है, इसको भी, इसका भी मीनिंग चला गया। वी नीड टू पुट दिस इन द प्रोसेसिंग एक्चुअली, प्रोसेसिंग। तो नाउ दिस इज समथिंग, आई जस्ट शो यू। सबसे पहले ओपन द टर्मिनल, काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, बट टर्मिनेट दिस। env, oh no, I have to do cd, now I have to do python here, now it will work. This got loaded। अभी डेटा क्लीनिंग प्रोसेस, दो ऑब्जेक्ट मिल गए मुझे। एक डेटा लोडेड वाला ऑब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद में डेटा क्लीन, ये नॉर्मलाइज का जो डेटा है, इसको देखते हैं हम लोग। हैविंग, ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड, आई नीड अ कॉपी ऑफ दिस वन। डेटा को अपडेट कर रहा है अपने आप ही सब। यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट, राइट, सो दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग अपडेटेड, तो इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। ओके, दिस इज नॉट नॉर्मलाइज डेटा। यहाँ पर आपको ये दिखेगा मेरा इज हैपनिंग, या थोड़ा सा, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो पूरा स्क्रॉल हो जा रहा है ये। ओके, सो दिस इज माय नॉट नॉर्मलाइज्ड डेटा, राइट, दिस इज माय नॉट नॉर्मलाइज्ड डेटा। यहाँ पर वी एच जो सब कुछ है प्रेजेंट, एज भी प्रेजेंट है, 24 23, ये सारा एज प्रेजेंट है, ये सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वांट। एक क्लीन जो है डेटा, इसमें डेटा कुछ इस तरह से क्लीन वर्जन है। नॉर्मलाइज्ड डेटा है, इसके अंदर ही मुझे वैल्यूज असाइन करनी है ताकि कैन हैव समथिंग मीनिंगफुल देयर। यहाँ पर आ गया मेरा डेटा वापस। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस वन। क्लस्टर्स में गया मैं, क्लस्टर्स रीड किए, नाउ आई हैव मीनिंगफुल डेटा बैक। तो लेकिन क्लस्टर्स आर मिसिंग, क्लस्टर कहाँ चला गया? क्या हो रहा है यहाँ पे? लास्ट कॉलम कहाँ गया क्लस्टर का? नॉर्मलाइज डेटा को मैंने क्लस्टर असाइन किया यहाँ से, जो डीएफ क्लीन से वापस आया। एरर आया यहाँ पे कुछ तो। कंटेन्स एनएन, कहीं तो एनएन वैल्यूज है। ओके, लेट्स जस्ट चेक दिस वन। ये अच्छा मिल गया हमें, इज एनए
Some. Okay, so this guy is हमने प्रोडक्ट्स को क्लीन नहीं किया. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो क्या हो रहा है? There is one product which is having some missing values. Okay, so we didn't clean that part. That we missed, right? तो हमने क्या किया? यहाँ पर सब कुछ तो सेलेक्ट किया हमने. When we select the products, ये जो products wise हमने जो select किए interested products, इनमें अगर कुछ missing रहेगा तो we are not doing anything about that, right? So first thing we have to do is, अगर missing data ही more than 20% है तो उनको drop करना है. That was something that we missed. Updating this one only. यहीं पे interested products है हमारे पास. So this in interested products, I have this df to segment. df to segment के ऊपर जो p है, what is na divided by sum of this. ठीक है. I'm just taking कि इसका मिसिंग वैल्यू कितना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. ठीक है. अगर वो मिसिंग वैल्यूज मेरे डेटा से 20% से ज्यादा है, सो दिस इज शेप is, so I have, if this thing is uh, greater than 20, right, then ये जो इंटरेस्टेड है ना, इसके अंदर से मुझे उसको ड्रॉप करना है. आई डोंट वांट टू यूज दैट. अनचेक्ड, just call it unchecked. मैंने अभी तक इनको चेक नहीं किया इसलिए. ठीक है. अनचेक्ड interested product is equal to ये and E और टॉप प्रोडक्ट्स जिनमें मिसिंग वैल्यू है, विथ मिसिंग ग्रेटर देन 20%. अगर उससे ज्यादा है तो उसको ये करो, और मिसिंग को इम्प्यूट भी करना है हमें. करेक्ट. तो जस्ट यूज द सेम जो ये वाला इम्प्यूटेशन है, वही वाला इम्प्यूट कर लेते हैं हम लोग. So we'll just impute E, will fill NA with what? Random choice between 0 and 1. सेम थिंग. अगर मिसिंग डेटा है किसी एक प्रोडक्ट के लिए, उसको हम लोग रैंडम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे हमने सेक्स के लिए किया था, मेल और फीमेल के लिए. ओके, दिस इज स्टिल टू मच. 10% या मे बी 5% से ज्यादा मिसिंग होगा तो. So you guys should try this one in notebook, but because I already know how to do it, how to do this check, इसलिए मैंने इसको notebook में नहीं किया. Okay. Just get this terminate this one. प्रॉब्लम क्यों आ रहा है हमें बार बार? बिकॉज ये जो हम लोग रैंडम कर रहे हैं यहाँ पर, बार बार हमें अलग अलग वैल्यूज मिल रहे हैं. ऑलराइट, लेट मी जस्ट रन दिस वन नाउ. सॉरी गाइस. Okay, now we have clusters. All right, so now we have clusters and now this should look okay. Cluster आ गया. These are my columns, age, products, और ये clusters है मेरे पास. Okay. अभी मैं इस पे ये वाला चार्ट बना देता हूँ, which is this plot. This plot is important for us. Okay. So all I need is this part.
we're trying to understand the clusters now. Okay, so I'll just put this head here. This is head. This is P. This is this. एरर क्या है? क्लीन करना प्रोसेस करना पड़ेगा उसको. प्रोसेस जब मैं करता हूँ तब ये करता हूँ. करेक्ट. Okay, now here we are going to go back to our Reshma's code. रिकमेंडेशन सिस्टम जो हमने किया था उसमें हमने एक फिक्स डाला था जब नोटबुक में हमें यूटिलिटीज को एक्सेस करना है. तो ईडीए में नहीं था वो, फुल रन में था, फुल साइकिल में. ये था वो चेंज. दिस वाज दैट फिक्स व्हिच विल फिक्स पर्टिकुलर थिंग. गलत जगह कर दिया मैंने. So we are getting slightly different clusters, but it's fine because वो डेटा अलग सिलेक्ट हो गया था अपना. ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है. आई जस्ट नीड टू डू कॉपी हियर. No, it does not like it. Okay. तो ये जो प्रिंट है यहाँ पर, दिस इज जस्ट टेलिंग मी कि ये पीसीए में कितने इन्फॉर्मेशन कैप्चर की गई है. 3 क्लस्टर्स है हमारे पास. एक येलो कलर का क्लस्टर है, ग्रीन कलर का क्लस्टर है और एक मरून कलर का क्लस्टर है. अगर मैं इनके ऊपर ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ तो क्लियरली यहाँ पर 3 क्लस्टर्स बन रहे हैं. एक इधर वाला क्लस्टर है, एक इधर वाला और एक इधर वाला क्लस्टर है. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू चेक द पीसीए दैट वी क्रिएटेड. ये जो पीसीए का जो ऑब्जेक्ट है, let's check the object. अब वो पीसीए में जो मॉडल है, जो बना है अपना मॉडल, उसका इक्वेशन चेक करना है मुझे, सो दैट आई नो कि कौन से इसमें किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. ओके, सो दैट विल गिव मी फ्रॉम कौन सा कंपोनेंट्स विल दिस गिव मी दैट. ओके, सो दैट्स वन, दैट्स द सेकंड वन. ठीक है, दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनाए मैंने. पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट इज दिस वन, second is this one, and
I want to understand कि ये जो data है, this belongs to whom? Okay. Now this is a place. अभी अगर if this is a XY plot, यहाँ पर x की value कम है. Okay. The value of x is low and the value of y is high. Alright. तो PC1 की value कम कब आएगी? Okay, this is going to be a little bit complex now. Let's check here. Who are these people? Okay, these people are. Okay. If I were to build a decision tree model, तो मुझे शायद से पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है और ये लोग कौन है और ये लोग कौन है. I think that's intelligent idea actually. अभी मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा डेटा है इस पे मैं डिसीजन ट्री मॉडल बिल्ड करता हूँ और मुझे एक ट्री बनेगा. उस ट्री से मुझे पता चल जाएगा कि रूल्स क्या क्या है. ओके, तो आई हैव दिस क्लस्टर्स नाउ. आई फिट अ ट्री और वो ट्री से मुझे पता चलेगा कि कौन सा डेटा कौन से क्लस्टर में कैसे जा रहा है. ओके, लेट्स मे बी डू दैट. गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस. So you want something interactive. I know ये नहीं काम करेगा. ये कहाँ गया? इसके learn. Okay, you want this one. Decision tree classifier को import किया है ऐसे. ठीक है. Decision classifier. How this thing क्यों नहीं चल रहा है मेरा आज. Copy. I don't need this. इसकी जरूरत नहीं मुझे. Okay. And y की जरूरत है. And this is my data. F clusters. F clusters. Uh, इसमें से I don't want. Okay. For this works. मुझे सारे कॉलम्स लेने हैं except the clusters column. This worked. And I want only clusters column here. ठीक है. So that would be -1 here. सिर्फ लास्ट वाला कॉलम चाहिए. मॉडल फिट कर रहे हैं हम लोग अभी. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? कैनॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट एच. ओह या, क्योंकि यहाँ पर कार्ट नहीं काम करता. राइट, वी आर मेकिंग इट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स आई थिंक. उसके बाद में ये फिर से एरर देगा, बोलेगा कि दिस इज हैविंग मोर देन 2 क्लासेस. ऑलराइट, it's still worth it. Let's do it. डेटा है, a column is giving me an error which is h, right? So I'll just call it df model. So df to model is this.
कॉपी कर लिया, फिर मॉडल कर लिया, इसके change किया, और get dummies shop, गया कोड get dummies का process pandas dot get dummies. Okay, I'm just building a decision tree model, by the way, so that I can. Okay, obviously there was going to be an error. अभी क्या हो गया इसको? Float में नहीं हुआ h convert. Is this because I want to be a model here? Okay, here you go. Model build हुआ. Let me just plot this. Hopefully this works. कभी कभी काम नहीं करता मेरे कंप्यूटर पे. Import graph viz. Try this. ये कभी कभी काम नहीं करता मेरे कंप्यूटर पे. graph viz को import करना है ना. What layer is this one? ग्राफ इसको डाउनलोड करना है ना. Okay, so this graph is used for just seeing that plot that मुझे ये चार्ट दिखाना है बेसिकली. आई जस्ट वांट टू, ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट मुझे दिखाना है सो दैट वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि हर एक क्लस्टर में हर एक क्लस्टर का मीनिंग क्या है. ओके, तो बस उसके लिए हमें प्लॉट निकालना जरूरी है. ठीक है. For that I need to install something. What is that something? Stable version built on Windows. Okay. .exe file is fine. Okay. इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं ग्राफिक्स को. आप लोग रिफर करना है टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन लेटर, हाउ टू प्लॉट इट. वी आर एट दिस स्टेप राइट नाउ. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्लस्टर्स. ओके, वी वांट टू एक्सप्लेन द क्लस्टर. जो क्लस्टर तैयार हुए हैं हमारे, उनको एक्सप्लेन करना है हमें. तब तक मैं क्या करूंगा, इसको कमिट करता हूँ. ये जो चीजें यहाँ पर लिखी गई है ना, इनको कमिट कर देता हूँ ताकि यू गाइस विल हैव इट फॉर योर एक्सेस. लेट मी गो टू गिटहब. इसको गेट चेक इन नहीं करूंगा, इसको नहीं करूंगा, नोटबुक को नहीं करूंगा, नोटबुक को नहीं करूंगा. रिक्वायरमेंट डॉट टी डेटा लेयर फुल रन मॉडलिंग यूटिलिटीज, ये सबको रन करता हूँ. कमिट कर रहा हूँ मैं. ठीक है.
requirement.txt data full run modeling utilities. ठीक है, डाउनलोड हो गया. लेट मी रन दिस वन क्विकली. ठीक है, आई installed this one. Okay, I installed this version 64-bit exe version. इसको मैंने इंस्टॉल किया. If you guys come back, ये लिंक ध्यान में रखो, मतलब you will be able to see it on the recording anyways. और इस पे क्लिक करके मैंने इंस्टॉल किया उसको. ओके ठीक है. नाउ we can export graphics if you your conta install python graphics या फिर pip install python graphics ये करना है मुझे. ठीक, कस्टमर सेगमेंटेशन का प्रोजेक्ट है अपना. we open the terminal, open a local one, pip install install हो गया graphics. free export output file नहीं, render. I want it to be here. Okay, this file should work. Export, import graphics, tree dot export graphics. What is my tree here? Tree कौन सा object? Oh yeah, okay, understood. ठीक है, I'll just do this one. Yeah. Classification का object है ये. I will remove this part here. So what I did was यहाँ पर मॉडल तैयार किया मैंने, उसका क्लासिफायर लिया. दिस माय क्लासिफायर. देयर इज नो आउटपुट फाइल, देयर इज नन ऑफ दिस. इस चीजों की जरूरत नहीं है मुझे किसी की. फीचर नेम्स, ठीक है, आई जस्ट पुट द फीचर नेम्स हियर. इज my df2 model dot, it's actually not even that, it's x dot columns. X dot columns, class names, target names. Okay, is this y? Let's just check. देखिए देखते हैं. Okay, so that's, yeah, मैंने इसको रन नहीं किया पहले कभी. That's why it face some issues here. Yeah, it's there in my path file. यही होता है हमेशा. Whenever I try to run this one, this x, ये एरर कहाँ पे है, कौन से मेथड पे है? Okay, let me just check this error. ये error क्या है?
try to fix this one. This should fix our issue क्योंकि हमने इंस्टॉल तो किया उसको but it's not able to find it, right? So this should fix it. Let's go and check उसको इंस्टॉल कहाँ किया हमने. ग्राफ is था वो this PC C program files and then है क्या यहाँ पे ये office आपको आपके पाथ में डालना है, ठीक है? ये पाथ आपका काम नहीं करेगा, तो आपके प्रोजेक्ट के लोगों के लिए ये make sure you put your own path. There you go. Now we have something finally. Okay, इसका डेप्थ चेंज करता हूँ मैं अभी ट्री का. ऑब्जेक्ट आ गया. मैक्स स्टेप में 3 करता हूँ so that we are able to see it properly. All right, so I have this first one, which is a sample of 10,000. Okay, these will go into left and right. Once we go there, just a second, guys. I'm trying to understand this one. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसीजन ट्री जो हमने बिल्ड किया उसका रूल कैसे बना है वो दिखाया जा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहला रूल था कि इसकी वैल्यू लेस देन 105 रहनी चाहिए. अगर नहीं है तो राइट साइड में जाएगा, अगर है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है? तो गोइंग बैक टू द फर्स्ट फ्यू सेशंस दैट वी डिड, ठीक है? सेकंड वाज दिस सेकंड कॉलम वाज द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट है अपना यूएलटी प्रोडक्ट. अगर कस्टमर does not have the ULT product, then go on this side. If he has the ULT product, go on this side. Okay. So what I'm trying to do here is ये जो out वाला product, what is my output, right? मेरा जो output है, that is my clusters, right? So I just want to get those cluster names back in here. तो इसी के लिए मुझे उनका लास्ट नेम से शायद से हो जाएगा. लेट्स सी. आई ऑलरेडी नो कि यहाँ पर कौन से क्लास है, राइट? 0 1 2 take it. Okay. 1. Okay. All right. So let's try to understand यहाँ पर क्या चल रहा है. सबसे पहले तो वी ऑलरेडी नो कि हमारा सबसे कॉमन क्लास कौन सा है, क्लस्टर कौन सा है. क्लस्टर 2 जो है सबसे कॉमन क्लस्टर है, करेक्ट? तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ डॉट वैल्यू काउंट्स ऑन माय क्लस्टर्स. तो आई नो दैट क्लस्टर 2 इज मोस्ट कॉमन, ठीक है? So to start out with, everyone is belonging to cluster 2. Okay, everyone is belonging to cluster 2. Particularly, people whose this value is less than 105. ठीक है? तो let's see who are those people जिनकी value of this is less than 105. सबसे पहले तो इसका understanding करना पड़ेगा हमें. What exactly is that?
So going back to our data is the data. So I'll write some rules now. Okay? So that using the decision tree, I'll write some rules. So data description. Customer seniority. Okay. So the rule is customer is greater than 105. So this is in months, right? So अगर इसको मैंने columns में years में convert कर दिया तो let's just कर this is 05 divided by 12. That's more than 8 years, right? If a customer is more than 8 years old, okay? If the customer is more than 8 years, it's not the old, it's actually the age of the customer with the bank. बैंक के साथ में कितने दिनों से customer है वो, ठीक है? तो if it is more than, तो ये right side में जाएगा. It belongs to certain type of a customer, and if not, then it belongs to some other type of a customer, ठीक है? First thing I see here is INDCNO fin ULT1. So let's check ये कौन सा type का account है. This is a payroll account. Okay. And so once we get the payroll account, उसके बाद में we check if the person is having a age less than 40, and if a person is having an age of, if he's having a payroll account, yes or no. So first we mention this branch जहाँ पर we have someone who is an old customer. Then we check if he's having a payroll account or not. If he's having a payroll account, then we check the age of the person. Okay. We already have classified it into 0. Okay. Age of the person. Something. Okay. So here we have class 2, which is person who is having your account which is less than 8, who does not have a payroll account, who is less than 55 age, belongs to your cluster 2, most common cluster. Let's write it down here. Okay, we are trying to explain the clusters. Cluster 2 means someone who is less than 8 years seniority. Okay. Second rule, someone who is not having a payroll account, who does not have a payroll account. Okay. Next, whose age is less than 55. Right? True वाले सब left side में जा रहे हैं, correct? Age is less than 55. Age is less than 55. Those belong to this cluster. Okay. थोड़ी देर में हम लोग फिर से will come back. Try to get the information for all the clusters. Cluster 1 के लिए क्या है? Cluster 1 is actually a subset of this particular thing. पहले दो rules same है, and after that we are getting some of the other things here. So maybe it will become difficult for us to get the cluster 1, but we can target this cluster 0. So cluster 0 को target करते हैं पहले. Cluster 0 is someone who is old. So I mean, who is having more than 8 years seniority. More than 8 years seniority. Uh, After that is someone who does not have a payroll account and who does not have a payroll account. Okay.
and all of that belong to class 0, class 0, class 0, class 0, class 0. Everyone belongs to same class, which is class 0. All right. Cluster 1 is little bit tricky. क्यों? क्योंकि it is actually a subset of cluster 0 और cluster 2 दोनों का. तो let's try to understand ये क्या है. ठीक है. तो let's go to the data understanding part. Here is where you have to wear your business understanding hat. Okay. So let's go to the data understanding part. हमारा सबसे पहला कॉलम था column name. This one. This one. Okay, something Spanish word जिसका length of service, right? So this is length of service. Correct. So we are right. Longevity, length of service. उन सबका meaning है कि ये वाला ये particular this particular customer base. ठीक है? तो we'll just change this less than 8 years with bank. Okay? Let's change this less than more than 8 years with bank. So this is our old customer who does not have payroll account and whose age is less than 55. Okay, this is someone who is fairly new customer because वो लोग 8 साल से ज्यादा नहीं है हमारे बैंक में और उनके पास हमारा पेरोल का अकाउंट है नहीं. ठीक है. तो both of this are someone who does not have payroll account. So finally our cluster 1 should be someone who has payroll account. Right. So this is what is happening with the customer 1 or class 1. Regardless उनका age कितना है, they could be banking with us, they could be not banking with us. They are someone who is having the payroll account. ठीक है. Now the idea is after you do the customer segmentation, this information will go to the business team. उनको आप बताओगे कि हमारे पास 3 टाइप के कस्टमर्स हैं. एक ऐसा कस्टमर है जो हमारे साथ में 8 साल से ज्यादा काम कर रहा है, हमारे साथ में 8 साल से मतलब फेयरली न्यू कस्टमर और उनके पास पेरोल अकाउंट नहीं है और उनका एज 55 से कम है. तो उनके लिए कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे रहेंगे, राइट? व्हाट प्रोडक्ट्स ऑफ आवर पर्टिकुलर बैंक are going to be good for this type of a cluster or this kind of people. Can we push more products? तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर? We may try to push these people to open a payroll account. We may try to push these people to maybe start a savings account. Because this age is less than 55, maybe we can push these people to also start a pension account. जब उनका एज पेंशन एज आ जाएगा तब they can start making use of that pension account from our bank, right? So these are some services that you can push to these customers. Someone who is more than 8 years old but still does not have a payroll account, you can start pushing उनको अच्छे interest rate दो. Tell them that if you open a payroll account with us, we will give you better interest rates on your savings. We'll give you lower. We'll try to increase your credit score. So those kind of customers are these ones. जिनको आप कुछ अलग तरह के कस्टमर प्रोडक्ट्स बेचना चाहोगे. And this one is someone who is having a payroll account. अगर उनके पास payroll account है, then maybe you can start pushing more accounts to them. Savings account batao, checking account batao. Tell them about the other services that our bank provides. Okay, so that is what the evaluation or the explanation of the cluster means. यहीं तक आपका project खत्म होता है actually. Okay, the issue that we have right now is this will not make sense because हमने थोड़ा सा data use किया, हमने सारा data use नहीं किया. अगर हम सारा data use करेंगे तब maybe ये clusters अलग आएंगे और आंसर्स भी अलग आएंगे. तो फिर आपके टीम को करना क्या है
You have to go to this code here, which is a full run. यहाँ पर आपको यूटिलिटीज में जाना है, नहीं यहाँ पर नहीं, डेटा लेयर में जाना है और इसको पूरे डेटा पे रन करना है, ठीक है। और इसको भी रिमूव करना है, इसको भी रिमूव करना है और पूरे डेटा पे रन करना है, एनालाइज करना है और वाला रिपोर्ट बनाना है जो मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है उसको आपको नोटबुक में लिखना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर यू हैव अ मार्कडाउन रिटर्न, उसमें लिखो कि क्लस्टर ए का मतलब ये है, क्लस्टर बी का मतलब ये है, क्लस्टर सी का मतलब ये है, नॉट हियर, यहाँ पे ये डायग्राम निकाल लो। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम and with the help of that you can say that we were able to conclude some things, ठीक है। and those things were क्या कस्टमर है हमारे पास। Almost tried. Let me get some water. You can add more data if you think this much data is not enough. यहाँ पर जाके चेक करो कौन सा डेटा आपको ऐड करना है, वो क्लीन करो एंड यूज दैट डेटा टू। लेट मी जस्ट मेक श्योर मैं यहाँ पे पिप फ्रीज नहीं किया था थोड़ी देर पहले। I should be doing the pip freeze and then commit. और रिक्वायरमेंट्स में कुछ नए फाइल्स ऐड हो गया, which is fine. I'll ये क्लस्टर अंडरस्टैंडिंग का फाइल मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एनी क्वेश्चन गाइस, मैं शेयर कर दूंगा आपको सबको रिकॉर्डिंग। ट्राई टू रिविजिट दिस। आई नो इट्स अ लॉन्ग रिकॉर्डिंग बट मे बी नॉट फुल, जितने भी आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है तो जस्ट वन विजिट दैट। दिस इज हाउ द फुल प्रोजेक्ट वुड लुक लाइक। ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बनाए मैंने। आई एम होपिंग कि आप लोग कुछ इस तरह से बनाओगे प्रोजेक्ट्स, ग्रुप बी एंड सी, ठीक है। तो ये फुल रन का फाइल रहेगा। I'll just run this one file and your code should run. All right, I'll stop now. Let me just go back here and stop the recording.